Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, welcome back to your online maths class. Students, in previous videos we have completed page number 10 and I gave you some homework also. So students, tell me, have you completed your homework? Very good. So students, firstly in this video we'll check our homework and after we will start new topic. Okay, means page number 11. So students, firstly take your maths book and open page number 10. So students, this is your page number 10 and these two lines are your homework. So have you completed your homework? Very good. Now we will check your homework. So let's start. Here we have some subtraction questions. So now let's start our homework. Here if we will subtract 3 from 13, then we will get 10. Next one, if we will subtract 5 from 13, then we will get 8. Okay, like this, 13 minus 9 equal to 4. Okay, next one, 14 minus 6, 8. 14 minus 7, 7. Okay, next one, here 15 minus 4. If we will subtract 4 from 15, then we will get 11. Okay, next one, 9. 15 minus 8. Tell me students. 7. Here 16 minus 2, 14. Okay, next one, 16 minus 6, 10. 16 minus 9, 7. Next one, 17 minus 8, then we will get 9. Okay, next one, 17 minus 9, then we will get 8. Okay, understood all of you? So check your homework from here. Okay, now come on your next page number 11, math gym. Okay, so students, here we have some questions related to addition and subtraction. Okay, so first one question is fill in plus or minus, means here we have some questions students. Okay, so students, in this question we have to fill correct sign on the blanks according to equation. Okay, so let's start. Here 6, 5 and 11. So students, tell me, if we will subtract 5 from 6, then we will get 11. No, very good. But if we will add 6 and 5, then we will get 11. Very good. So write plus. Okay, next one, if we will divide 5 from next one, if we will subtract 5 from 11, then we will get 6, and if we will subtract 6 from 5, then we will get 5. Okay, and like this, 12 minus 2 equal to 10. 12 minus 10 equal to 2. But if we will add 10 and 2, then we will get 12. Okay, next one, 9 plus minus 5 equal to 4. 9 minus 4 equal to 5, and 5 plus 4 equal to 9. Okay,
So students, in this question you have to fill correct sign according to the equations. Okay students, if we have largest number after equal, then we have to fill sign of addition. Okay, but if we have smallest number after equal, then we have to fill sign of subtraction. Okay, like this. Here after equal, here we have largest number compared 8 and 7. Then here if we will add 8 and 7, then we will get 15. Okay, but here we have smallest number 7 from 15. Then here if we have to fill subtraction sign. Okay, like this here also. Understood all of you? अगर आपके पास इक्वल के बाद, इक्वल साइन के बाद अगर आपके पास लार्जेस्ट नंबर है, इन दोनों से लार्जेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर प्लस साइन आने वाला है. और लेकिन अगर आपके पास इक्वल के बाद फर्स्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर है, मीन्स यहाँ पर सब्सट्रैक्शन साइन आएगा. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? वेरी गुड. एडिंग टू नंबर्स गिव्स देयर सम. एडिंग टू नंबर्स गिव्स देयर सम. लुक हाउ द 3 नंबर्स आर रिलेटेड. स्टूडेंट्स, कोई भी दो नंबर को ऐड करके हमें क्या मिलता है? उसका सम, मीन्स उसको ऐड सम मिलता है. तो हमें ये बताना, लुक हाउ द 3 नंबर्स आर रिलेटेड. सो स्टूडेंट्स, लुक हियर हाउ द 3 नंबर्स आर रिलेटेड, मतलब 3 नंबर्स रिलेटेड कैसे होते हैं. सो लुक हियर 6 + 2 = 8. If we will add 6 and 2, then we will get 8. Okay, and if we change the we can, if we have to change next one, if we will change the place of 2 and 6, means first number is 2 and second number is 6, then again we will get 8. Okay, next, if we will subtract 6 from 8, then we will get 2, and if we will subtract 2 from 8, then we will get 6. Look here, if we will subtract 6 from 8, then we will get 2, this one है ना. And if we will subtract 2 from 8, then we will get 6, means 8, 2 and 6 related na. 8, 2 and 6 are related. Next one, look here, 9 and 3 = 12. 9 + 3 = 12, या 3 + 9 = 12, मीन्स अब 9 + 3 = 12. ओके, अगर ये इफ़ वे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम 9 and 3 की का प्लेस इंटरचेंज कर दें, then after this we have, then after this we will get 12 again. Okay, next one, if we will subtract 3 from 12, then we will get 9. If we will subtract 12 from, if we will subtract 3 from 12, then we will get 9. Okay, if we will subtract 9 from 12, then we will get 3. मीन्स यहाँ पर 3 नंबर्स है ना स्टूडेंट्स. लुक हियर, 3 नंबर्स हैं. अगर हम फर्स्ट नंबर सम में से, मीन्स 12 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सेकेंड नंबर मीन्स 3. लेकिन अगर हम 12 में से 3 माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है फर्स्ट नंबर मीन्स 9. मीन्स अगर हम सम में से फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है सेकंड नंबर, और हम सम में से सेकंड नंबर माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है फर्स्ट नंबर. ओके, लाइक दिस, सम वन नंबर द अदर नंबर. अगर हम सम में से कोई भी एक नंबर माइनस करें, तो हमें अदर नंबर मिलता है, जो दूसरा नंबर है. ओके, लाइक दिस 12, हियर इज सम इज 12 ना. फर्स्ट नंबर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 9 या 3. ओके, नाउ हियर वी विल एड 9. सो इफ वी विल सब्सट्रैक्ट 9 from 12, then we will get 3. अंडरस्टूड?
अगर हम 12 माइनस 3 नंबर ले लेते हैं 3, then we will get 9. Understood all of you? Very good. Now here we have some questions related to this process, so we have to solve these questions and we will fill answer of these questions in the boxes. Okay, so first one is 5 plus 2. Again 1 2 3 4 5, and again 2 also. 1 2 means 7. Okay, 7 minus 2, tell me students. 5. Very good. 7 minus 5, 5 plus 2 equal to 7. Very good. 7 minus 2, 5. Now again 7 minus 5, next number is 2, and here 2 plus 7, then इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है ना, देन सम इज 7 माइनस फर्स्ट नंबर इज 2, द अदर नंबर हमें कैसे मिलेगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 मीन्स 5. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. अगेन 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 3, नेक्स्ट नंबर 4. अगेन 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, and 7 minus 3 equal to 4. Understood all of you? How will you do these questions? Very good. Next one, 6 plus 3 equal to 9. And now if we will interchange these numbers, then 3 plus 6 equal to 9. Understood all of you now? How will you do this question? These all questions related to this formulas. Okay, these all questions related to this method. Students, these all questions related to this method. Understood all of you now? If we will subtract sum, now here 9 like this, 6 plus 3 equal to 9. Okay, next one, here 6 plus 3 equal to 9. Next one, 7 plus 2 equal to, tell me students, 9. Very good. Now again from this method, 7 plus 2 means sum is 9, first number is 2, then other number is 7. So right here 7, na? Very good. If we will subtract 2 from 9, then we will get 7. Again sum is 9, next number is 2, then other number is 7. Okay, next one, 8 plus 4 equal to 12, 12 minus 4 equal to 8, 12 minus 4 equal to 8, and 12 minus 4 equal to 8. Okay, understood all of you? Means 8 plus 4 equal to 12. If we will subtract 4 minus 12, then we will get 8. Here if we will add 8 plus 4, then we will get 12. Okay, if we will subtract 12 minus 8, then we will get 4. Okay, understood all of you? Next one, 9 plus 5 equal to 14, 14 minus 9 equal to 5, then answer is 5. 9 plus 5 equal to 14, and last one is 5. If we sum is 14, first number is 5, then subtract, and next number is 9, then 9. So students, understood all of you? How will you do these questions? Understood all of you now? How will you do these questions? So students, again look here. हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि 3 numbers कैसे related होते हैं. Okay, like this, first number is 6 plus 2. First number is 6. Second number is 2. And after 6 and 2, after addition 6 and 2, we will get 8. Okay, तो हमें अब यहाँ पर ये दिखाना है कि 6, 2 and 8 आपस में कैसे related है. Okay,
So if we will interchange places of 6 and 2, then again we will get 8. अगर हम 6 और 2 की का प्लेस इंटरचेंज कर दें तो हमें फिर से ही सम क्या मिलेगा 8. ओके. अगर नेक्स्ट वन, इफ़ वी विल सब्सट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम सम, अगर हम पहला नंबर सम में से सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा अनदर नंबर, मीन्स नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 6. ओके. बट अगर हम सम में से सेकंड नंबर माइनस कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट नंबर. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस मेथड? वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, डू रिविजन ऑफ दिस मेथड एंड कंप्लीट दिस वर्क इन योर मैथ्स बुक. Okay, understood all of you? Now turn your page. Students, here we have some question of add. Okay, means some question of additions. So students, and this question of additions of 2 digit. Okay, so look here 52 and 34. Okay, like this 52 plus 34. Here we have two numbers na, 52 and 34. So students, here 2 digit 52 2 digit number and 34 is also 2 digit number, means this one tens and this one ones, again this one tens, this one ones. So students, we will add ones to ones and tens to tens, means students हमें ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए हमें वंस से वंस को ऐड करना होता है और टेंस से टेंस को. ओके, लाइक दिस हियर 2 प्लस वंस कौन से हैं 2 एंड सेकेंड नंबर में वंस कौन सा है 4. देन वी विल ऐड 2 and 4, देन वी विल गेट 6. ओके. नेक्स्ट वन, हमें टेंस से टेंस को ऐड करना होता है तो 5 and 3, 5 + 3 = 8. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्टली आपको क्या ऐड करना होता है, फर्स्टली आपको वंस ऐड करना होता है. ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट प्रोसेस एंड दिस वन इज सेकेंड प्रोसेस. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगेन आई विल टेल यू, इफ यू हैव 2 digit numbers, if you have questions of addition of 2 digit numbers, then firstly you have to add ones to ones and tens to tens. मीन्स अगर आपके पास एडिशन के क्वेश्चंस 2 डिजिट्स के हैं तो आपको फर्स्टली वंस से वंस को ऐड करना है और टेंस से टेंस को ऐड करना है. ओके. और इस प्रोसेस में आपकी सबसे पहली प्रोसेस होती है कि आप सबसे पहले वंस से वंस को ऐड करते हैं. ठीक है, ना कि टेंस से टेंस को ऐड करना है. अगर आप एडिशन के क्वेश्चंस 2 डिजिट के क्वेश्चंस एडिशन के सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको वंस से वंस को ऐड करना होता है. ठीक है, वंस से वंस को ऐड करने के बाद टेंस से टेंस को ऐड करना है. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग ऑल्सो, so you have 2 numbers, but first number of 1 digit number like this 2 and second number is 2 digit number like this one. Okay, so you have to let is second digit is 0. Okay, so again like this, like previous method, firstly add ones, so then 4 + 2 = 6, and after this is first process and after this second process. So 0 + 1 = 1. Okay, so students, if you have 2 numbers for addition questions and you have one number you have 1 digit number like this. Okay, तो आपको उसकी सेकेंड डिजिट, आपको उसकी सेकेंड डिजिट 0 मान लेनी है like this. Okay, and you have this number also 14 + 2, then again you let here second digit is 0, then again 14 + 4 + 2 = 6 and 1 + 0 = 1. Understood all of you? How will you add these questions? Very good. Now next one, here TOT, here this is ones number and this is tens. Okay, so add this. If we will add 7 + 2, then here na firstly in this process firstly we will add ones place digit na, so add this 7 + 2 = from first method 1 2 3 4 5 6 7 and 2 also
8, 9, then 9. Okay, and here in first number we have 2-digit number, but in second number we have only 1-digit number na. Then we'll add here second digit is 0. Then if we will add 2 plus 0, then if we will add, then students, if we will add 2 and 0, then we will get only 2. Okay, next one, 0 plus 6, 6 and 4. 5 plus 2, 7. Now again here second number is of 2-digit number and first number of 1-digit number, so that here second digit is 0. Then if we will add 8 and 0, then we will get same number 8. Okay, 6 plus 3, 9 and 6. 4 plus 4 and 9. Okay, next one, here we have two numbers. Here we have two numbers and all of numbers of 2-digit numbers. Okay, so like him, firstly add ones, 5, 3, 8, and after adding ones I add tens number 1, 1, 2. Okay, my dear students, I will again tell you, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एडिशन क्वेश्चंस में अगर 2-digit नंबर्स हैं तो आपको फर्स्टली 1 digit के नंबर्स ही ऐड करने हैं, और 1 digit के नंबर्स ऐड करने के बाद ही आपको 10th प्लेस की डिजिट ऐड करनी है. ओके, लाइक दिस, फर्स्टली we will add 4 and 5, then we will get 9, and after this 3 plus 2, 5. 4 plus 3, 7, and next one 4 plus 5, 9. Okay, next one 8 plus 1, 9. 5 plus 3, 8. Okay, 5 plus 2, 7, and 4 plus 2, 6. Okay, so students, this line, so students, this line is your homework. Do this line yourself at your home. Okay, like this. Understood all of you students? Very good. Now come on to your next question. This is also question of additions. Okay, so again firstly add ones, 5 plus 2, 7, and after this add tens, 2 plus 1, 3. Again add ones, 3 plus 2, 5, and after this add 2 plus 2, 4. Again 5, 0 plus 5, 5, and 3 plus 1, 4. Next one 3 plus 4, 7, and 4 plus 1, 5. Understood all of you? Very good. So students, these two lines are your homework. Okay, these two lines are your homework. So do these lines at your home. Do yourself very carefully and honestly. And students, one thing also, write neat and clean. Okay, and write carefully and do and solve these questions very carefully. Okay, solve these questions very carefully. And again I will tell you, in addition question, firstly add ones, and after ones then you will add tens. Okay, understood all of you? So these three lines are your homework. Do it yourself at your home very carefully and honestly. Okay, and write in good handwriting. Okay, bye. Thank you. Have a nice day.